Activity and activity coefficient. In 1908, Jean-Lewis introduced the concept of activity and activity coefficient in order to explain the deviation of electrolyte solution or gas from ideal behavior. When the solution is highly dilute, it means completely dissociate into ions and all the ions are available for कंडक्टेंस। मतलब यहाँ कहने का मतलब है कि यहाँ पे अगर सॉल्यूशन जो हमारा हाईली डाइल्यूट होगा तो हमारा जो आयन होगा वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा और वो कंडक्टेंस ज़्यादा शो करेगा क्योंकि कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। दिस सॉल्यूशन इज सेड टू बी आइडियल सॉल्यूशन और ये सॉल्यूशन जो हमारा होगा आइडियली बिहेव करेगा। एंड फॉर द आइडियल सॉल्यूशन इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑब्जर्व इज इक्वल टू द एक्चुअल कंसंट्रेशन थियोरेटिकली। इसमें क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशन के लिए हमारा जो इफेक्टिव कंसंट्रेशन होता है वो इक्वल होता है एक्चुअल कंसंट्रेशन के। But the electrolyte which is not completely dissociate, in that case effective observed concentration is always less than actual concentration. Lewis introduced the term activity coefficient to explain the deviation from ideal behavior. That is the activity coefficient gamma is equal to effective concentration by actual concentration, and effective concentration is denoted by the A and actual concentration is denoted by M. Here A is equal to M into gamma. But the activity of cation where M plus is the concentration of cation, ये हमारा M plus है यहाँ पे वो हमारा concentration है cation का, एंड गामा प्लस जो हमारा ये गामा प्लस है वो एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ cation. कंसिडर्ड एन इलेक्ट्रोलाइट AX एंड BY, तो हमारा ये एक्स ए प्लस हो जाएगा और वाई बी माइनस हो जाएगा। दैट मीन 1 मोल ऑफ AX/BY प्रोड्यूस x मोल ऑफ कैटायन A प्लस कैटायन एंड y मोल ऑफ एनायन B माइनस प्रोड्यूस इन ए सॉल्यूशन, दिस वन। Therefore, the activity of above electrolyte is defined as the product of activities of cation and anion. मतलब ये activity of cation, this is activity of cation and this is activity of anion, overall activity. And 1 mole of electrolyte produce x mole of cation. Concentration of cation will be x times the concentration of electrolyte, that is m plus is equal to xm. Activity of cation is equal to x m and activity coefficient of cation. Let's put this value on equation second, we get this one, and where gamma plus minus equal to mean activity coefficient. तो हमारा यहाँ फॉर्मूला होता है E इक्वल टू एक्स टू पावर एक्स वाई टू पावर वाई एंड m पावर x प्लस वाई एंड गामा प्लस माइनस पावर x प्लस वाई। तो इसको थ्रू ये हमारा जिसके थ्रू जो हमारा ये फॉर्मूला एक तरफ से इक्वेशन टाइप का आया है उसके थ्रू हम निकाल सकते हैं, हम एक्टिविटी किसी भी मतलब दिया है इलेक्ट्रोलाइट का तो उसमें इसका एक्टिविटी हम निकाल सकते हैं। तो ऐसे केस फर्स्ट यहाँ पे हमारा फॉर यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट एग्जांपल of this electrolyte is NaCl, KCl. So NaCl gives Na plus Cl minus, and here x is equal to 1 and y is equal to 1. Then the equation 4 become h equal to x equal to x power 1 to power 1 because x equal to 1 to power 1 and y equal to 1, this one, and m power x plus y, m power 1 plus 1 and gamma x plus y 1 plus 1, ये this one, h equal to m square और gamma plus minus square. Okay, second for uni bivalent electrolyte like this example, this one and this one. Zinc chloride is gives Zn2 plus N2Cl minus. Here x is equal to 1 Zn plus 2 and y is equal to 2 Cl minus.
here y is equal to 2. So h equal to x to power x means 1 to power 1, y is equal to 2 means y to power 2, and y is equal to 2 to power 2, m to power x plus y, m to power x plus y means 1 plus 2, m power 1 plus 2, and gamma power x plus y, gamma 1 plus x plus y, x plus y 1 plus 2, this one h equal to this one. Case third, for trivalent electrolyte, for example AlCl3 gives Al plus 3 plus 3Cl minus. So here x is equal to 1 and y is equal to 3. Then we put in this equation x to power x means x to 1 to power 1, 1 to power 1, y to power y means either y to power y, 3 to power 3, and m to power x plus y plus 1 plus 3, and this one gamma 1 plus 3, because gamma we have 1 x plus y here. So final h equal to 27 m power 4 gamma plus minus power 4, final answer. Now see numerical problem based on the activity. First, calculate the activity of zinc chloride solution, which is 0.5 molar. The mean molar ionic activity coefficient is this one. Here x is equal to 1 and y is equal to 2. So और ये फॉर्मूला जानते हैं, a equal to x power x, y power y, and this one. So we put this value x to power x, 1 to power 1, 2 power 2, mm 1 plus 2, and this one, and we get this. Similarly, this question we can solve. Calculate the activity of NaCl solution, which is 0.05 molar. The mean molar ionic activity coefficient is this one. So we put on this formula x to power x, y to power y, m to power x plus y, and gamma x power x plus y, and we get this one.